गोपीजनाय कथितं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमथ साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रपूरयो मुरलिकां यमुनावनान्ते सम्मूर्च्छनाभि उदित स्वरमण्डलाभिः सम्मूर्च्छयन्तम् अखिलं भुवनान्तराळं त्वद्वेणुनादम् उपकर्ण्य विभो तरुण्यस्तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापु तागेहकृत्य निरदास्तनयप्रसक्ता कान्दोपसेवनपराश्च सरोरुहाक्ष्य सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशमयि कान्दतनु समेता कश्चित् निजाङ्गपरिभूषणम् आददान वेणुप्रणादम् उपकर्ण्य कृतार्धभूष त्वाम् आगत ननु तथैव विभूषिताभ्य त एव संरुचिरे तव लोचनाय हारं नितम्बभुवि काचन धारयन्ती काञ्चीं च कण्डभुवि देव समागता त्वां हारित्वम् आत्मजघनस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाष इव मुग्धमुखी विशेषात् काचित् कुचे पुनरसज्जितकञ्जुलिका व्यामोहतः परवधूभिः अलक्ष्यमाणा त्वामाययौ निरुपमप्रणयातिभार राज्याभिषेकविधये कलशीधरेव काश्चित् गृहात् किल निरेतुम् अपारयन्त्यः त्वाम् एव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित् सुखरूपमेकं त्वाम् आविशन् परमिमा ननु धन्यधन्या जारात्मना न परात्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गता परमहंसगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परमात्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतम् अस्रममश्नुवीय अभ्यागताभि अभितो व्रजसुन्दरीभिः मुग्धस्मिताद्रवतन करुणावलोकी निस्सीमकान्ति जलधि त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्य हर मे पवनेश रोगान्। श्री गुरुवायूरप्प शरणम्।